Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to make bird eye chili pickle. So मैंने अपनी चिली को बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है धो के एंड ये मैं अपने घर से लाई थी बट बना नहीं पाई। देख सकते हो आप इतना अच्छी तरह सूख गया है ये। So yeah, we will make some tasty pickle out of it today. So let's begin the process. We will need some turmeric powder, okay, and some garlic, लहसुन। उसके बाद अचार मसाला, I bought this from दुकान, and some नींबू का रस and सरसों का तेल। Mine is from Fortune, आप कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं, and some salt for the taste. So these are the ingredients that we will be needing to make this simple chili pickle, bird eye chili pickle. So yeah, let's begin. So हम कढ़ाई ले लेंगे और अपना गैस को जला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में सरसों का तेल डालेंगे। Okay, so now I'm putting the oil in the कढ़ाई। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से तेल डालना। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको 2 कप 1 कप ऐसे डालना है। ओ माय गॉड, स्माइली बन गया है, सो स्वीट, सो क्यूट आई मीन। और हम तेल को गर्म होने देंगे। मेरा ऑयल फटाफट से गर्म हो रहा है। आई एम एक्साइटेड टू मेक दिस पिकल। सो या मेरा तेल इट सिम्स लाइक गर्म हो चुका है। सो वी विल लाइक लोअर द फ्लेम एंड हम इसमें अपना चिली सीधा पोर कर लेंगे। लाइक हम डाल देंगे पूरा चिली एंड वी विल फ्राई दिस फॉर 5 मिनट्स बिकॉज मेरा चिली ऑलरेडी सूखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वी विल ओनली फ्राई फॉर लाइक 4 to 5 minutes. ओके, नाइसली लाइक दिस। It's so pretty, सुंदर लग रहा है। And we will add some salt. Then we'll mix it. We'll mix it properly. Then we are going to add some red chili powder for some color. ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऑलरेडी चिली का अचार है, सो लिटिल बिट विल डू द जॉब। ओके, एंड विल मिक्स इट। विल मिक्स इट प्रॉपरली इन लो फ्लेम। ओके, अदरवाइज मिर्ची जल जाएगा। सो लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। And after some time we will add the achar masala. As per the quantity of the chili you can add it. So I'm adding 2.5 spoon of achar masala in my chili and we'll mix it. And then I'm pouring some lemon juice instead of vinegar. जैसे उबाल आ गया है। It's smelling so nice. And then we'll take a small pan and we'll let it heat. Let's turn on the gas. Okay, after some time we will pour some mustard oil in it. ये अपने अचार के क्वांटिटी के हिसाब से आप डालना। सो मैंने अपना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है एंड देन विल लेट इट हीट सो दैट द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द मस्टर्ड ऑयल कैन फेड अवे। Let it heat for some time.
My oil is heating properly. So now I have added garlic cloves मैंने add कर लिया है. And then we are going to add 1 tablespoon of turmeric powder in it for the color, and we'll fry the garlic till it gets brown in color, like little bit brown in color, light brown in color. So until then just fry it. It's looking beautiful. Now it's done. Turn off the gas. And pour the entire thing in your achar. And then give it a good mix. अच्छी तरह से mix कर लेना. It's looking so good. It's so juicy and smells so heavenly smell आ रहा है. So yeah, इसको अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे. Let it cool. And after 25 minutes ये cool हो चुका है, ठंडा हो चुका है. Now I'm going to bottle it up. So bottle में हम डाल लेंगे. I thought 2 bottle लगेगा, but it seems like एक ही bottle लगने वाला है. So let's fill the bottle with our bird eye chili achar. Dun, dun, dun. Oh my god, I don't believe myself I did this. फटाफट से भर लेते हैं अपना बॉटल. अच्छी तरह से दबा के डालना ताकि एयर पास ना हो. एंड माई अचार इज़ परफेक्ट इन क्वांटिटी, एंड ऑयल भी बहुत परफेक्टली मेजर करके मैंने डाला है. सो आई होप टेस्ट अच्छा हो. यू कैन ऑल्सो मेक इट. अच्छी तरह से भर देंगे पूरे के पूरे अचार. आई वॉज राइट. एक ही बोतल में सारा अचार फिट हो रहा है. आई एम गोइंग टू फिल दिस नाइसली. Whoa, it's done. And it's done. Ta-da! Your bird eye chili pickle is ready. If you like this video, then please do like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye!